Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medico's Maharathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss mixed bag previous year questions for medicine NEET PC. So आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके? मेडिसिन के किस पैटर्न में? मिक्स्ड बैग में, और एग्जाम क्या है? नीट पीसी. ओके. So my dear friends, before starting our today's discussion regarding mixed bag previous year question, I want to request you to do three things. Just do three things for me and for yourself also. Okay. So press a like button for this video. Okay. Press share button and do share with your friends. Okay. And third one is press subscribe button if you are new to my channel. Okay. So all these are also important for me and for you also. Okay. So what is next? Let's start our discussion. First question: in which clinical scenario after giving folic acid neuropathic feature start worsening? क्या बोल रहा है? Neuropathic feature start worsening. Here are four options. What do you think? Which vitamin deficiency will show us neuropathic feature worsening? It is vitamin B12. Okay, vitamin B12 deficiency will shows us neuropathic feature start worsening. Okay, we are giving here folic acid. So why vitamin B12 is correct? I made here a simple flow chart. Okay, vitamin B12, it is responsible for myelin formation. Okay, myelination. And myelin is responsible for performing for maintaining nerve function. Okay, so vitamin B12 क्या कर रहा है? myelin formation. myelin किसके लिए responsible है? nerve function. क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? न्यूरोपैथिक फीचर स्टार्ट वर्सनिंग. यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्स हो रहा है? नहीं. लेकिन when there is deficiency of vitamin B12 there will be demyelination. अब विटामिन B12 ही नहीं है तो माइलिन कहाँ से आएगा? और माइलिन ही नहीं आएगा तो demyelination होगा. ओके. एंड इफ there is demyelination it will lead to neurological problems. So neuropathic features start worsening in the case of vitamin B12 deficiency, or you can also say these complete same scenario which is related to vitamin B12 occur with folic acid. What is next question? In comparison to a normal healthy person in the evening time, which of the below have elevated ACTH as well as elevated cortisol? Here are four options. Normal healthy person, Addison disease, Cushing disease after exercise. So my dear friends, correct answer for this question will be Cushing disease. Cushing disease ही correct क्यों है? So my dear friends, in normal healthy person, generally what happens when normal healthy person falls asleep, or you can say when normal healthy person have not a high elevation with level of ACTH and cortisol. Okay, if the normal healthy person falls asleep, then there will be low level for both these things, ACTH and cortisol. Okay, so elevated होने का कोई चांस नहीं है. ठीक है. एडिसन डिजीज में भी कोई चांस नहीं है. ठीक है. कुशिंग डिजीज, my dear friends, this disease will show you high elevation for ACTH and cortisol after exercise. No. Okay, so correct choice for this question will be C option. What is next question? Characteristic feature of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. एग्जाम का 2019 का क्वेश्चन है नीट पीजी का, और ये लो ऑप्शंस. ठीक है. Increase size of arteria, asymmetric septal hypertrophy of septum, increase size of ventricle, normal myofiber arrangements. So what do you think? What is correct choice? Correct choice for this question will be asymmetric septal hypertrophy of septum. So most characteristic choice यही है. ठीक है. Option A can also be a correct choice. Okay, but it is less correct. Okay, so what happens? We see increase in size of arteria, but it is not that characteristic feature for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Okay, obstructive जो है ना, ये केस यहाँ पर मतलब थोड़ा, अगर ओनली हाइपरट्रोफिक होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव भी है.
तो ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में जब मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो होगा एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी ऑफ सेप्टम, इंक्रीज साइज ऑफ वेंट्रिकल ना बाबा ना, वी विल सी low size or decrease size for ventricle, not increase. Normal myofiber arrangement, no no no, so correct choice will be B. What is next question? MRP2 gene is associated with which of the following? Here are four options. Okay, choose one correct choice. Okay, MRP2 एक जीन है, किससे एसोसिएशन है इसका? लेट्स सी. My dear friends, correct choice for this question will be Dubin-Johnson syndrome. Okay, so here some full forms for you. First, you can see this both option, Crigler-Najjar syndrome type 1 and type 2. Both are associated with gene that is UDPGT. UDPGT क्या है? Urine 5 diphosphoglucoronyl glucoronosyl transferase. ओके, ये जीन है, ठीक है, एंजाइम है. इसका जो एंजाइम एसोसिएशन है, जीन एसोसिएशन है, वो क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 1 टाइप 2 से है, ठीक है. और जो स्लोक, ये क्या है? रोटर सिंड्रोम. रोटर सिंड्रोम इट इज एसोसिएटेड विद स्लोक 1b1 एंड b3 म्यूटेशन. ये जो जीन है म्यूटेशन, इसका म्यूटेशन होगा तब क्या होगा? रोटर सिंड्रोम. ओके, सो स्लोक का फुल फॉर्म क्या है? सोल्यूट कैरियर ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर. व्हाट इज दिस सोल्यूट कैरियर ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक कोडिंग प्रोटीन है. क्या है? ये एक कोडिंग प्रोटीन है. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRP2 जीन? MRP इट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन. MRP खत्म. MRP2 जीन इज एसोसिएटेड विद ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, क्योंकि बाकियों में तो मैंने बता ही दिया, इसमें फर्स्ट और सेकंड में तो UDPGT है और थर्ड ऑप्शन में स्लोक B1 B3 जीन और प्रोटीन कोडिंग जीन म्यूटेशन है. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? गलत कौन सा है? ठीक है, रॉन्ग मैच. रैम, साटूथ वेव, ओके, NREM1 बेटा वेव. व्हाट इज रैम? रैपिड आई मूवमेंट. NREM क्या है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट. सो व्हाट इज करेक्ट चॉइस माय डियर फ्रेंड्स? करेक्ट चॉइस विल बी नॉन रैपिड आई मूवमेंट 1 स्टेज. इसमें पता है 3 स्टेज होती है. जो स्टेज 1 होती है ये क्या है? यहाँ पर गलत है, ठीक है, बेटा वेव नहीं होता, ठीक है. तो क्या होता है? पहले फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन, रैपिड आई मूवमेंट shows us sawtooth wave. Okay, sawtooth wave like this. Oh, it is not working here, 1 minute. Like this. Okay, sawtooth wave like this it will be. And non rapid movement it will be alpha to theta wave, not beta wave, theta wave. और जो स्टेज 2 होगी ना नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसमें क्या होगा? थेटा टू बेटा वेव. सो बेटा वेव किसके लिए करेक्ट है? यहाँ पर अगर 2 नंबर होता तो ये बेटा वेव क्या होता? करेक्ट होता, रॉन्ग नहीं होता. तो यहाँ पर दिस इज रॉन्गली मैच्ड. Non-rapid eye movement stage 3 is associated with delta wave. It is correct. Rademacher complex it is associated with SSPE. Okay. So यहाँ पर आ गया ये non-rapid eye movement 1 is associated with alpha to theta. Alpha to theta. Correct choice क्या है? ये है. What is next question? Drug of choice in prophylaxis of meningococcal meningitis in healthcare worker. Okay, so let's see the options. There are 4 drugs. You have to choose one of the choice correct for healthcare worker. My dear friends, the correct choice for this question will be ceftriaxone. Ceftriaxone. Okay, so in which case we can also use this drug? Okay, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेल्थ वर्कर. अगर यहाँ पर होता कि प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, सो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी वी कैन आल्सो यूज. इट इज आल्सो गिवन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, इट कैन आल्सो बी गिवन इन केस ऑफ एम्पेरिकल ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. ओके, इन केस ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ceftriaxone plus vancomycin is given. Okay, so clear है choice. Ceftriaxone is drug of choice for meningococcal meningitis in healthcare worker.
What is next? All of the following feature are seen in left ventricular failure except क्वेश्चन कब का है नीट पीजी 2020 का ओके सो लेट्स सी लंग ओलिगेमिया curly bee lines crepitation pedal edema so the correct choice for this question will be lung oligemia correct choice क्या है lung oligemia सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एक्सेप्ट मतलब ये जो है ना लंग ओलिगेमिया ही हमको किस में नहीं दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में नहीं दिखेगा बाकी सब उसकी फीचर्स है ठीक है फीचर्स बोल रहा है ना ऑल ऑफ द फॉलोइंग सो करली बी लाइंस भी फीचर है क्रिप्टेशन भी फीचर है पेडल अडीमा भी फीचर है oligouria is also a feature ventricular gallop lines is also one of the feature and reduced air entry is also one of the features so you can note these features तो सारी फीचर कर ली ना हमने लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर्स की फीचर्स क्या हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं curly bee lines crepitation pedal edema oliguria ventricular gallop lines and reduced air quality so these all are features for left ventricular failure what is next which of the following is not a clinical presentation of pituitary apoplexy नीट पीजी 2020 का क्वेश्चन है ओके ऑप्शंस है ये हेडेक हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन वॉमिटिंग so my dear friends what is the correct choice करेक्ट चॉइस इज हाइपरटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अब जिसने करेक्ट मतलब मिस्टेक क्या होती है पता है आजकल कि स्टूडेंट्स रीड नहीं करते हैं क्वेश्चन अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने क्वेश्चन स्पीडली बोला तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं सुना ठीक है अब मैंने क्वेश्चन बोला ठीक है किसी ने नोट रीड नहीं किया होगा ठीक है तो व्हाट द स्टूडेंट इज मिसिंग टुडे दे मिस लास्ट वर्ड एक्सेप्ट दे आल्सो मिस समटाइम दैट एग्जामिनर सेइंग yes yes or just see option and see that yes this is correct yes he will read only one option or she will read only one option she or he will not read note is given here accept is given here so read the question carefully so यहाँ पर correct choice या फिर बोल दो incorrect option कौन सा है hypertension okay headache is a clinical feature and the location for this headache is retroorbital location okay it will be from retroorbital side okay hypotension it is also a clinical feature vomiting it is also a clinical feature okay and adrenal insufficiency lead to nausea vomiting arterial hypotension hypoglycemia okay and insomnia is also a clinical feature neck stiffness is also a clinical feature sometimes it's lead to subarachnoid hemorrhage so clinical feature किसकी कवर हो चुकी है यहाँ पर you can see the clinical features for okay ये नहीं है clinical feature बाकी सारी clinical feature है किसकी pituitary apoplexy so you can learn the clinical features of pituitary apoplexy from this question okay सारी features covered है यहाँ पर clinical features so my dear friends learn it now from here okay you will not forget because it is related to a question that is NEET PG 2020 what is next question which of the following is not a feature of secondary ACTH deficiency adrenocorticotropic हार्मोन ओके जिसको फुल फॉर्म नहीं पता हो ठीक है सबको पता है बाकी तो ठीक है नीट पीजी 2020 which of the following is not a feature okay hypotension fatigue hyperpigmentation anorexia which of the following my dear friends correct answer for this question will be hyperpigmentation correct answer क्या है hyperpigmentation मतलब hyperpigmentation को छोड़ के बाकी दोनों और ये तीसरा ऑप्शन ये जो है ना डी ऑप्शन ABD आर फीचर्स for secondary ACTH deficiency only hyperpigmentation is not feature so my dear friends in the case of ACTH deficiency we not see hyperpigmentation or skin pigmentation in hyper mode okay what is next hypernatremia hypoglycemia and are also features
Okay, characteristic feature for secondary ACTH deficiency and secretion of mineralocorticoid is intact in this case. So my dear friends, 1, 2, 3, 4, 5, okay, and 6. All features regarding secondary ACTH deficiency are covered during this क्वेश्चन. क्वेश्चन कब का है? नीट पीजी 2020 का. सारी फीचर्स कवर हो चुकी है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन लर्न the features for secondary ACTH deficiency from this question. What is next question? A patient of scleroderma present with acute respiratory distress syndrome. Okay, acute पे थोड़ा जोर दिया मैंने. Chest X-ray shows us bilateral reticular basilar shadows. What is next line of investigation in this patient? ये next line of investigation. It is, my dear friends, today mostly asked. Okay, what is you can see what is the correct choice? What do you think? So my dear friends, correct choice for this question will be high resolution CT. Okay, HRCT. Why HRCT is correct? So my dear friends, one thing I tell you now, HRCT, we use HRCT because it gives us appropriate and a good diagnosis and a proper diagnosis in short time. Okay, HRCT क्यों करते हैं? क्योंकि we accept a proper diagnosis. Okay, so that's why we are using HRCT. Okay, why we are not using a pulmonary function test? Because it is used in normal function. Okay, बट जब हमको नॉर्मल लंग का फंक्शन पता करना होता तब हम यूज करते हैं PFT. सो वी यूज PFT इन केस ऑफ for knowing normal lung function. Contrast intensity is used for diagnosing bowel valves. Okay, echocardiography, it is not used in acute. Okay, it is case of acute, so it is used within the time of 6 to 12 months. So it is recommended in 6 to 12 months once in complication like pulmonary hypotension and congestive heart failure. So recommended भी किस केस में है? pulmonary hypertension और congestive heart failure में. So high resolution CT और HRCT is correct choice. Neet PG 2020 का क्वेश्चन है. So my dear friends, here we discussed 10 question. Okay, so 4 question are from 1819 and 6 question are from 2020. Okay, and almost we discussed every question in a detail. So my dear friends, thanks to everyone. Okay, and you have to do three things: like this video if you are watching this video till now, press on subscribe button if you are new, and share this video with your friends. If you feel that this video is very helpful, then don't waste time, then do share this video with your friends. Thanks to everyone. Stay safe, stay healthy.